Okay, good evening all. See, in our previous lectures we have discussed about the theoretical question, the section A of the ethics paper, where I have told you there will be 10 questions, right? 13 questions, one question for the 10 marks, 130 marks, the section A. Today we are going to talk about the case studies. This is the section B. Okay. You already know that ethics paper is divided into the two sections. Now we are talking about the second section, the case study here. Okay. So in the second section there will be 6 case studies. One case study will be for the 20 marks. So like that there will be for the 120 marks the second section will be there. Almost equal, just like to the section A. Section is 130 marks, section B 120 marks, almost equal. And as for the time perspective also, you have to allocate the same time for the section A and the section B. Like you have the 3 hours to write the papers, 1.5 hours you are writing the section A, and you definitely need an 1.5 hour to write the section B, because there are 6 sections, 6 questions that you have to cover, and at least for writing the one case study you need 15 minutes. You have to read the case study, you have to understand the case study, and then you have to write it. So you need at least 15 minutes to do all that. Okay. वैसे देखा जाए तो 16 minutes भी is very less, 15 minutes is very less, because you have to do so many things here. इतनी बड़ी केस स्टडी, यहाँ पे तो छोटी सी दी गई है. ओके, यू सी द नेक्स्ट केस स्टडी थोड़ी सी बड़ी केस स्टडी है. सो वहाँ पे तुम्हें केस स्टडी पढ़ना भी है, समझना भी है, डिफरेंट एस्पेक्ट भी निकालना है और लिखना भी है, एंड ऑल दैट यू हैव टू डू इन द 15 minutes. 3 to 4 pages you will be given. Like for a section A, I told you for every question you are getting 2 pages. Here you are getting around 3 to 4 pages. Okay, around 3 to 4, not more than that. That much you have to write. In how many words you have to write the case study answer? 250 words. Okay, for section A we have seen that you are writing the answer in 150 words. For section B you are writing in 250 words. 250 words, 15 minutes, and you allocate 15 minutes to all the case study. That will be around 1.5 hour for 6 case studies. Okay, right. So before just directly jumping into the first case study, first understand how to write the answer in the case study and what are the important thing to know about the case study. See, in the case study what you have to do, you have to first read it well, underline the things which you think are important, because बार बार तुम ये नहीं पढ़ सकते. 15 minutes में तुम इतना बड़ा पैराग्राफ बार बार कितनी बार पढ़ोगे? You can't read it again and again. So whatever the things you think are important for writing your answer, तुम्हें फर्स्ट टाइम रीड करते हुए उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुम जब पढ़ोगे यू डोंट हैव टू रीड द कंप्लीट केस स्टडी. बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि 15 minutes में पॉसिबल ही नहीं है. 2 to 3 minutes जाएंगे तुम्हें केस स्टडी. अगर बड़ी केस स्टडी होगी 3-4 मिनट तुम्हारी केस स्टडी पढ़ने में जाएंगे. ओके, सो यू कैन नॉट रीड इट अगेन एंड अगेन, तो अंडरलाइन करना है. सेकेंड थिंग, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन द केस स्टडी. सॉल्यूशंस तो तुम्हें देने हैं. सॉल्यूशंस तुम कब दे पाओगे? ओनली व्हेन यू विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स. सो जब भी तुम केस स्टडी पढ़ रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरलाइन द प्रॉब्लम्स आल्सो. जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम्स फाइंड कर पाओगे उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स फाइंड करो, बिकॉज जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स उतने ज्यादा सॉल्यूशंस तुम केस स्टडी में दोगे. दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ योर केस स्टडी. योर केस स्टडी आंसर विल बी मल्टी डायमेंशनल. एक ही प्रॉब्लम समझ में आया, एक ही सॉल्यूशन दोगे, सो दैट विल बी यूनिडायमेंशनल. ज्यादा मार्क अच्छे नहीं आएंगे. ज्यादा प्रॉब्लम्स फाइंड कर पाए, ज्यादा सॉल्यूशन दे पाओगे, सो आंसर विल बी मल्टी डायमेंशनल. समझ रहे हो मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाना है आंसर? मल्टीपल प्रॉब्लम्स फाइंड करके. दैट यू हैव टू डू. ओके, while writing the answer, what you have to do, you have to write only those things which are asked in your case study. जितना पूछा है उतना ही लिखना है. Okay, but एक structure में. In the structure, at the start you will write the introduction. एक 4 to 5 lines of introduction. In section A, I was always telling you 3 to 4 lines. यहाँ पे 4, 5 या 6 भी लाइन हो सकते हैं, not more than that. But you have a scope. सेक्शन ए में जितने तुम इंट्रोडक्शन लिखते थे उससे थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हो. 1-2 लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखे जा सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू राइट 3 pages एंड ऑल. सो थोड़ा सा तुम बड़ा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, बट नॉट मच. ओके, आधा पेज इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है. ओके, अराउंड 4-5 lines अराउंड इंट्रोडक्शन यू हैव टू राइट. व्हाट यू आर राइटिंग इन इंट्रोडक्शन? इन इंट्रोडक्शन you are giving the brief summary of the case study plus the values which are important in case study. Okay, don't just give the brief summary. Okay, ऐसा नहीं लगना चाहिए बस जो केस स्टडी उसी को छोटा करके लिख दिया.
नहीं, ओके वो तो क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया. You are writing in brief, but you are also talking about the values which are involved in the case study. So you are making it as a ethical introduction. After that, you are going to write the stakeholders. Okay, कि कौन कौन से stakeholders हैं, mean which are the different people or which are the different institutions which are involved in the case study. Stakeholders लिखने पड़ेंगे. Okay, ऐसा कोई compulsory नहीं लिखने ही है stakeholders. If you have the time, if you have the space, write it. If you don't have the time, don't have the space, don't write it. Okay, but if you have time, write case stakeholders. उससे benefit क्या होता है देखो, जितने तुम stakeholders लिखोगे while you are writing the answer, तुम्हारे दिमाग में ये कहीं ना कहीं रहेगा कि I have to write the problems or I have to write the solutions of all the stakeholders which are involved here. अगर तुम्हारे दिमाग में 2-3 ही stakeholders आते हैं तो फिर आंसर में भी 2-3 ही आएंगे. If you are writing 5-6 stakeholders, so आंसर में भी वो वैरायटी आती है, सारे stakeholders आ जाते हैं, मल्टी डायमेंशनल आंसर बन जाता है. ओके, वो स्टेक होल्डर है मतलब उसका कुछ ना कुछ रिलेवेंस है केस स्टडी में, एंड दैट रिलेवेंस यू विल शो इन योर आंसर. जब आंसर राइट करोगे उस स्टेक होल्डर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ लिखोगे. मल्टी डायमेंशनल बन रहा है, इसीलिए स्टेक होल्डर्स लिखना जरूरी है. आफ्टर स्टेक होल्डर्स यू आर डायरेक्टली जंपिंग टू द व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. जो भी पूछा है डायरेक्टली जंप करो उस पे, एंड आफ्टर दैट एट द एंड यू आर राइटिंग द कंक्लूजन. ओके, कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि क्या क्या जरूरी है, कुछ क्या कौन सी वैल्यू जरूरी है, कुछ कोट्स लिख दो, एक आध दो थिंकर्स डाल दो, या जो डिसीजन तुम ले रहे हो वैसा ही डिसीजन तुमने क्यों लिया ये तुम कंक्लूजन में लिख सकते हो. कंक्लूजन कैन बी अराउंड 5 to 6 लाइन्स. ओके, छोटा मतलब 5 to 6 लाइन कंक्लूजन ना. कोट्स हो या थिंकर्स हो तो अच्छा है, और इथिकल वैल्यूज डालो. पूरे आंसर में कई सारे इथिकल वैल्यूज दिखने चाहिए. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. अंडरस्टूड? एक स्ट्रक्चर. सो वेन एवर यू विल रीड द केस स्टडी, फर्स्ट अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से है, फिर जो पूछा है उस पर सीधा लिखना शुरू कर दो, एंड देन राइट द कंक्लूजन, एंड दैट इज हाउ यू विल फिनिश द केस स्टडी. अब इसमें वॉट एवर द क्वेश्चंस दैट वी आर सीइंग टुडे, इन लाइक द फर्स्ट केस स्टडी इज अबाउट द जनरल. यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हें स्पेसिफिक इंसिडेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं दिया है. वही सेकेंड केस स्टडी में देर इज अ ह्यूज डिटेलिंग एक इंसिडेंट दिया हुआ है. ओके, फर्स्ट केस स्टडी में एकदम डिटेल इंसिडेंट्स नहीं दिया है, एक तो जनरल पर्सपेक्टिव हैज बीन गिवन एंड थोड़ा जीएस टाइप लगने लगता है, राइट. सम केस स्टडी विल बी लाइक दैट ऑल्सो, एंड सम केस स्टडी विल बी सेकेंड केस स्टडी, जो बड़ी केस स्टडी हर चीज एकदम डिटेल में दी हुई है, ऐसी केस स्टडी भी है. ओके, both are easy to write, no problem. In the first case study that we are going to see, यहाँ पे थोड़ा GS टाइप आएगा, यहाँ पे थोड़ा GS का नॉलेज भी यूज हो सकता है. जहाँ पे सेकंड केस स्टडी आएगी वहाँ पे तुम्हें स्ट्रिक्टली केस स्टडी पे अटैच होकर रहना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज केस स्टडी में ही कई सारी चीजें दी हुई है, बहुत सारा डिटेलिंग दिया हुआ है. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी. ओके, आई विल गिव यू सम टाइम. इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा जितना तुम लिख रहे हो, और केस स्टडी में आंसर लिखे जा सकते हैं. आई नो इन सेक्शन 1 यू हैव टू थिंक अ लॉट, बट इन सेक्शन 2 यहाँ पे तुम्हारे सामने एक इंसिडेंस है, एंड उस इंसिडेंट को तुम्हें एनालाइज करते आना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू थिंक कि हाउ वी कैन गिव द सॉल्यूशन टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है. आई विल रीड द क्वेश्चन, देन वी विल डिकोड इट, वी विल सी द डिमांड, and then you will write it. Okay, so first, a building that had received official permission for only 3 floors. Okay, एक building है, official permission has been given for 3 floors only, was illegally extended to 6 floor by a builder. 6 floor बना दिए builder ने from 3 to 6, and it collapsed, right? As a result of this incident, many innocent laborers, including the women and the children, lost their lives. कुछ लोग मारे भी गए. All these laborers had migrated from different regions. The government immediately announced financial assistance for the affected families and arrested the concerned builder. Explain the reason why such incidences occurs across the country and suggest the necessary measures to prevent it. Why I called this particular case study is more or less related to GS, because जो questions अगर तुम देखो तो questions में ज़्यादा case study में से नहीं पूछा गया है. In such type of a case study, the question has been the context
has been given to you, only context दिया है तुम्हें. On this context it is asked, give the reason why such incidences are happening. Not just particularly this incident they have asked, they generally asked why such incidences are happening. क्यों हो रहा है. लिखना easy है, बिकॉज यहाँ पे तो तुम्हें केस स्टडी फिर से पढ़नी ही नहीं है. वंस यू अंडरस्टूड द केस स्टडी इज अबाउट इलीगल कंस्ट्रक्शंस किया जाता है, लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा है हर चीज में, जिसकी वजह से लो क्वालिटी भी तुम बिल्डिंग्स बना रहे हो, जान भी जा रही है लोगों की, और सरकार तो दे ही रही है असिस्टेंस, बट दैट्स नॉट इनफ बिकॉज द पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. ओके, सो दैट इज द रीजन. तुम्हें ये देना है कि व्हाई सच इंसिडेंट्स आर हैपनिंग. पहले तुम ये हेडिंग बनाओगे, आफ्टर स्टेक होल्डर देन यू विल राइट कि ऐसे इंसिडेंसेस क्यों हो रहे हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन. हियर यू विल राइट इन अ पॉइंट फॉर्मेट, बट पॉइंट्स यहाँ पे सेक्शन ए टाइप नहीं है. इन द सेक्शन ए हमने क्या देखा था, जो पॉइंट्स बन रहे थे ना, पॉइंट्स वेयर 1 लाइन 2 लाइन पॉइंट्स वेयर सेक्शन है. यहाँ पे तुम 3 लाइन टू 4 लाइन भी पॉइंट बना सकते हो. दैट मच फ्रीडम यू हैव इन द केस स्टडी, बिकॉज लिखना बहुत है. एक एक लाइन का पॉइंट बनाओगे तो 3 पेज पॉइंट लिखोगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो 3 लाइन टू 4 लाइन पॉइंट ऑल्सो इज स्मॉल पैराग्राफ, वी कैन कॉल इट एज स्मॉल पैराग्राफ. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू गिव द रीजंस, then you have to give the solution, suggest the necessary measures to prevent it. Understand? Okay, यहाँ पे case study just as a context लिया हुआ है. Actual question is just like a GS type question हो गया कि why such incidents are happening and give the solution. So तुम्हें think करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये चीजें क्यों हो रही है. But यहाँ पे remember this is ethics paper. So even though थोड़ा सा GS type हो रहा है, doesn't mean GS का लिखा गया. Ethical angle में ही सोचना है. Think about the reasons in ethical angle, suggest about the solutions in ethical angle. समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, इंट्रोडक्शन, स्टेक होल्डर्स, you have to give the reasons, write 5 to 6 points, then give the solutions, give 5 to 6 points, then give the conclusion. Structure समझ में आया? Okay, whenever you are writing the stakeholder just write their names. Don't explain the stakeholders, just give the names कि कौन कौन है केस स्टडी में. ओके, और ये इंसिडेंसेस तो होते ही रहते हैं. जैसे अगर अभी की न्यूज, जस्ट फ्यू मिनट्स बैक अगर तुमने न्यूज फॉलो की होगी, सो इट इज द टुडे न्यूज ओनली, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज हुई है. इन गुजरात देयर वाज अ ब्रिज ऑन अ रिवर, द ब्रिज कोलैप्स्ड. ओके, सम पार्ट ऑफ द ब्रिज, नॉट द कंप्लीट ब्रिज, सम पार्ट ऑफ द ब्रिज कोलैप्स्ड. So the people were driving on the bridge with the cars submerged into the rivers. Okay, so many cars were there who were on the bridge. They could not control the speed, of course. They submerged into the river and more than 10 people had died. And government suddenly, just like here has been said, government announced the compensation assistance. Here also, today only just after the incident, government announced the compensation. People are dying. So this is nothing new that is happening, even today that happened. Okay, so this is happening again and again. So that's you have to write why it is happening and give the solution. Okay, then you will write the conclusion. Understood? Format you understood? I am giving you few minutes and you have to write. See, case study writing is very very simple. Okay, in GS1 in section A at least you should know few things, and how to deal with that we have already seen. 2 lectures हो चुके हैं हमारे, एक मराठी एंड इंग्लिश मीडियम, द एथिक्स सेक्शन है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केस स्टडी विच इज वेरी वेरी सिंपल टू राइट. ट्राई टू जस्ट थिंक क्या रीजन हो सकते हैं इथिकल एंगल में. करप्शन हो रहा है, ये भी एक रीजन है. लॉ नहीं फॉलो किए जा रहे, ये भी एक रीजन है. जस्ट ट्राई टू थिंक कि कितने रीजन हो सकते हैं एंड देन ट्राई टू राइट गिव द सॉल्यूशंस. ओके, जस्ट आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, 5 to 7 minutes. ट्राई टू राइट एज मच पॉइंट्स एज यू आर एबल टू राइट, और प्रॉपर स्ट्रक्चर में राइट करना है. ओके, यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. इंट्रोडक्शन, स्टेक होल्डर्स, रीजंस, सॉल्यूशंस, कंक्लूजन, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है. इंट्रोडक्शन 5 to 6 लाइन, स्टेक होल्डर्स के सिर्फ नाम, कंक्लूजन 5 to 6 लाइन्स, बीच वाले हेडिंग्स 1 लाइन के, और बीच वाले जो पॉइंट्स है 3 to 4 लाइन्स. इवन इफ यू वांट टू मेक अ सब हेडिंग इन सच क्वेश्चंस, यू कैन मेक अ सब हेडिंग. जैसे you are giving the reasons, so in the reasons also you can give the subheadings.
In the solution also you can give the subheading if you want to. So, this paper is about the thinking. The more you can think, the better answer you can write.
जमतंय लिहायला? Let's discuss now. Okay. Say introduction. I told you introduction. What you are writing? You are giving the brief. Okay, the summary. What actually happened in the case study. Along with that, you are giving some values, like which values are involved here. For example, there is empathy, sympathy. Okay, then legality. Okay, public service. All these values are involved here. Right to life. Article 21 Indian Constitution, you know it. Okay, so all these things value has been given. So introduction is very simple, where you are giving just like the building permitted for 3 floors, 6 floor that happened, migrant worker death had happened. Here the compassion and the empathy is compromised, the right to life Article 21 is getting violated. All these things that you will write in the introduction. I have given us so many things in the introduction, but you cannot write that much. Okay, max to max we know 25 to 30 words, that much you can write in 5 to 6 line. Okay, itna tumhe likhna, around 30 words introduction you are writing. Then you are writing the stakeholders, like which are the stakeholders. See,
यहाँ पे we have given the explanation also, but I have told you, when in actual exam you are writing, don't give the explanation, just write the stakeholders and give the list of the stakeholders. Or there are different ways how you can represent the stakeholders. Some people just make a T diagram and the arrows, okay, writing stakeholders and just writing the stakeholders around it. You can make a diagram like that also, or you can make a just like a box, arrows like this. So it's a way to differently you can represent, but don't do the same things in all the questions. In some questions do the box like that, some question make a round, in some question just write the headings and just list down the things, okay. So make a variety. In 6 question you should be maintain the variety, okay. So who are the stakeholders here? First we know the laborers, deceased and injured laborers and their families, main stakeholders, right. Second are builder, the construction entrepreneurs, because we know they are arrested, okay. So this is the second. Third, local municipal administration, city corporations, who were having the responsibility to give building permission, these people were also there, right. Third. Fourth, state government and the judiciary, government is also involved there, because government ensured the compensation, announced relief and all that. So government is also there, and judiciary who has to give the justice because these people are arrested, and NGO, media and the citizens, or in general you can call it society in general. Either you will write it like NGO, media, citizen, or you can write it as a society in general, same things. Understood? Stakeholders कैसे identify किए, okay. Who are directly which is mentioned, or indirectly which is direct affected in the case study, that all things that we have mentioned here. For example, judiciary also we have written, okay, because they are arrested. Justices, they will wait for the justice. Local administration also we have written. NGO, media or society in general, because society in general is also getting affected because of that. Like I told you, आज का जो incident हुआ, so next time तो वहाँ पे तुम भी डर जाओगे, ऐसा कुछ हो जाए तो ब्रिज ही कोलैप्स हो जाए. प्लेन क्रैश होने के बाद हमने देखा है क्या हुआ था. नो पीपल आर फियरिंग कि प्लेन क्रैश ना हो जाए, ओके. सो सोसाइटी में इन इम्पैक्ट द सोसाइटी ओवरऑल, ओके. सो these are the stakeholders. Once you write the stakeholders, then you will write the reasons. I told you, either you make the small paragraphs or you make the headings, subheadings, and then you write the points. Everything is fine, doesn't matter. Only thing is that 3 to 4 pages में खत्म हो जाना चाहिए, okay, and 250 words के अराउंड होने चाहिए. It should not be much more than that, because तुम ज़्यादा लिख नहीं पाओगे, okay. 6 केस स्टडी लिखनी है. एनर्जी, एक तो तुम फिजिक्स का पेपर होता है इतना बड़ा है, स्टार्टिंग से 1.5 घंटे में ही तुम थक जाते हो, ओके. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द 6 केस स्टडीज. वैसे ही थक जाता है आदमी, और ये भी होता भी है 5th पेपर. पहले ही दिमाग में आता है कि कब खत्म होगा, क्योंकि पहले तुम यू ऑलरेडी रिटन एसे पेपर, देन यू हैव रिटन GS1 GS2, मॉर्निंग यू हैव रिटन GS3, एंड देन देयर इज अ GS4 पेपर. उसमें भी आखिरी का टाइम है, हम देखते रहते कब 5 बजेंगे और कब पेपर खत्म होगा, बिकॉज आफ्टर दैट यू नो देयर इज अ 5 days गैप, और उसके बाद ही हमें आना है ऑप्शनल लिखने के लिए. सो हम सोचते रहते कब खत्म होगा, लिखने का वैसे भी मन नहीं करता, तब इतना सारा लिखना होता है, ओके. सो यहाँ पे आइदर यू राइट इन अ पैराग्राफ और यू राइट इन अ विद द सब हेडिंग्स. सो यहाँ पे आई हैव मेड फ्यू सब हेडिंग जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके. सो फर्स्ट वन, करप्शन. मेन रीजन इज करप्शन. Corruption in permit system and the corrupt official. These are the people, okay. They might have paid the hefty bribes for getting the permits, okay. Unauthorized floors, for giving permission for unauthorized floors. So of course there is a corruption in permit system, and there is the corrupt officials, okay. Moral collapse of the regulatory mechanism that happened here. The people working in the regulatory authorities, there is a moral collapse on them. They are not following the morality while doing the corruption. First. Second reason, lack of planning in urbanization. Uncontrolled urban expansion, that is the problem. तुमने urban planning ठीक से नहीं की है, urban expansion uncontrolled हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड की वजह से ये इलीगल काम हो रहे हैं. 3 फ्लोर के 6 फ्लोर बना दे, क्योंकि बनाने वाले को भी पता है डिमांड आएगी, ओके. सो uncontrolled urban expansion and increasing housing demand, that led to such infrastructure, creating such illegal infrastructure. Second problem, right.
देखो मैंने पहले ही कहा था इसमें थिंकिंग लगेगी, सो मोर यू विल बी एबल टू थिंक, ज़्यादा पॉइंट्स इसमें आएंगे। थर्ड पॉइंट इसमें नॉन एनफोर्समेंट ऑफ लेबर सेफ्टी एंड द वेलफेयर लॉस, देयर इज अ लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, हेल्थ, हाउसिंग फॉर द वर्कर्स इज एविडेंट, हमने सेफ्टी नहीं इंश्योर की गई है वर्कर्स की, ओके, बिकॉज ऑफ दैट ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। चीप लेबर, कहीं पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, विदाउट इवन इन अनसेफ्टी एनवायरमेंट दे आर रेडी टू वर्क, ओके। देन वीक punitive system against offenders, those who are committing the offense they know उनके अगेंस्ट बहुत कुछ होगा नहीं, दे आर पावरफुल, दे कैन पे द मनी एंड दे कैन गेट आउट ऑफ इट। सो इवन इफ दे नो दे आर डूइंग समथिंग इलीगल, दे आर रेडी फॉर इट, दे नो दैट अगर किसी को पता भी चल जाए कि इलीगल है, अगर ये गिर भी जाए, कोई लोग मर भी जाए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो बस बिल्डिंग बनानी है और बेचनी है, कल जाके ये गिर भी जाए तो देख लेंगे क्या होगा, कोर्ट केस होगी, बहुत पैसा है, चला लेंगे कोर्ट केस, ओके, पता है उन्हें कुछ नहीं होगा, बेल पे बाहर आ जाएंगे या जेल नहीं होगी, कुछ ना कुछ कर लेंगे, हो जाएंगे, जज मैनेज कर लेंगे, कुछ ना कुछ पता है, ओके। दे नो देयर punitive measures are very very weak, and that is the reason why the offenders are that much sure in doing such illegal things. Then insecurity of the migrant labor, that is actually a problem. These migrant laborers are illiterate and unaware of local laws, because in the case study what has been told, most of them are from outside, they are from the different regions, okay, they are illiterate and unaware of local laws, they don't know how the law works for them, what are the measures, what are the safety measures for them, they are not aware of it, and they are insecure also, they are poor people, insecure people, they need the job at any cost, and that is the why they are able to do such they are willing to do such job, and they are most vulnerable to accidents and exploitations. Understood the reasons? When you understood the reasons, you have to write the solutions, what are the measures can be done. First thing that we have to do is to enhance the transparency in building permission. किस तरह से building permission दे रहे हो तुम, because we know there is a lot of corruption that happens in giving such building permissions. So enhance the transparency in building permissions and enforcement system. How you can enhance it, that you have to write. Don't just write enhance. Remember, whenever you are giving the solution in the case study, don't just write the general statements. Always give the fixed solution, because you are an officer. तुम कोई जर्नलिस्ट, कोई ऐसे पॉलिटिशियन नहीं हो कि कुछ भी बोल दोगे और निकल जाओगे. You are an officer. Okay, so there you have to give specific measures. So how to ensure the transparency, such measures has been given here. For example, online permission system. Online hoga, everything will be there. Transparent mechanism, everybody knows everything. So proper transparency, proper accountability will be there. GIS based building inspection, use mapping, use GIS technology, satellite technology to inspect buildings, whether the work is happening proper or not, whether 3 floor permission has been given, whether it is 3 floor or not. Use the technology to do that. Third party audit karao, whatever the permits has been given by the government, उसकी auditing होनी चाहिए, permit सही से दिए है नहीं दिए, proper procedure follow किए नहीं किए, और whatever the result of giving the permit, whether the rules regulations are properly followed or not, उसका भी properly audit होना चाहिए, third party audit. Okay. Second, fixing accountability in public administration and urban planning. Okay, अगर कुछ भी हो रहा है, prosecute such people of town planning official, prosecute such officials if they are doing something wrong, and they should be prosecuted under the clauses like culpable homicide due to negligence. इससे बहुत ज़्यादा punishment होती है when you are punishing someone under the culpable homicide. Homicide ही है, इतने सारे लोग अगर मर रहे हैं, it's just like a culpable homicide. So many people are dying. You have murdered almost, it's just like a murder. Culpable homicide में होता क्या है? It's just like a murder. Okay, so they will have that threat or deterrence कि हमारे against ऐसी punishment आ सकती है. So that is required. Fixing accountability. Then ensuring labor welfare and making registration mandatory. All the labor should be registered. Like there is, we have e-shram portal where laborers are registered. So we have to
register the laborers or the laborers, give them insurance, give them safety training, okay, so that in such incidences they will be able to get the safety as much required. Okay, portable social security system for migrant workers, migrant workers के लिए security system होना चाहिए. ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट अगर उनको दे रहा है कंपेंसेशन तभी उन्हें कंपेंसेशन मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा. डोंट कीप देम डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट. ई श्रम पोर्टल पे जो भी रजिस्टर होता है सबको रजिस्टर कराओ, बिकॉज दोज हु आर रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल दे आर गेटिंग द सोशल सिक्योरिटी फीचर्स, पेंशंस, इंश्योरेंस, all those facilities they are getting. So laborers should get all these things. Then mandatory punitive on the civil action should be on the illegal construction. For example, immediate actions on illegal construction, गिरा दो illegal construction, अगर एक्स्ट्रा बनाया है गिरा दो उसे, मैंडेटरी एक्शन. इंक्रीज मॉनेटरी पेनाल्टीज, जिनको उनको पेनाल्टी लगने वाली उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दो. होता क्या है कि हमारे यहाँ पेनाल्टी बहुत लॉ में कम है, अगर कुछ भी हो जाता है तो 1 लाख 10 लाख, एक फ्लैट खरीदने जाओ तो करोड़ों खर्च दे रहा है और टोटल की पेनाल्टी हो रही है 5 लाख की पेनाल्टी, इतने पीपल लोग मर गए या एक्स्ट्रा तुमने हाउसेस बना दिए, 5 लाख 10 लाख की पेनाल्टी हो जाती है. सो यू हैव टू इंक्रीज द पेनाल्टी. अगर पेनाल्टी ही 25 करोड़ की होगी, सो उसे पता है बिल्डिंग में कमाएंगे 10 करोड़, पेनाल्टी देनी पड़ेगी 25 करोड़. Okay, so that will act as a deterrent against any illegal thing. So increase the monetary penalty, set up fast track courts so that फटाफट ट्रायल हो जाए, fast track within 4 months 6 months the judgment should be there to provide justice or to give punishment to the people. Citizen participation and public welfare होना चाहिए, public awareness होना चाहिए. For example, right to information होनी चाहिए. People should get the information कि भाई ये जो काम चल रहा है बिल्डिंग का, इसमें कितने की परमिशन दी थी और क्या प्रोसीजर्स फॉलो करनी है. पीपल शुड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मिलती है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, कि थ्रू आरटीआई यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. तुम्हारे अगर कहीं पे कुछ काम चल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो यू कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू आरटीआई. पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. लोकल मीटिंग, हाउसिंग कमिटीज, इंक्रीज सिविक पार्टिसिपेशन एंड द अवेयरनेस. ओके, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, हाउसिंग कमिटीज होनी चाहिए, लोकल मीटिंग्स होनी चाहिए विद इन द पब्लिक, बिटवीन द पब्लिक, टू मेक देम अवेयर. ऐसी चीज़ें भी हो रही है. अगर तुम समझो कोई घर लेने जा रहे हो तो तुम्हें पहले जो हाउसिंग कमिटीज़ वगैरह है उस कमिटीज़ में ये चीज़ें अवेयर कर दी जाएगी कि तुम जो भी बिल्डिंग ले रहे हो उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन ले लो. इलीगल तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कल जाके पता चले कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो गिरा दिया, गया तुम्हारा घर, या पूरी बिल्डिंग ही गिर गई, गया तुम्हारा घर, या जान भी चली जा सकती है. ओके, सो गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज द लोकल मीटिंग्स एंड द हाउसिंग कमिटीज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट एनीथिंग सिंस हैपेंड. ओके, देन द कंक्लूजन I told, write the values, what is right, what is wrong, give any quote that you can write into the conclusion. Okay, so such in conclusion we have just written it just like the disaster are not mere accidents, they are the result of planning, administrative and ethical failures. Conclusions are like that, you are just concluding what you have written in the main part. Here we have also given the Mahatma Gandhi quote, the true measure of any society lies in how it treats the weakest section, and we know here the weakest section was the most vulnerable, the laborers. Okay, so that is why we have written Mahatma Gandhi quotes also. Okay, and at the end we have written this incident should be seen as a warning. All stakeholders must take thoughtful steps. Beyond temporary financial aid, long-term institutional reforms are very, very essential. That is how we can ensure the good governance. Conclusion is just like you are summarizing all these things, but we have added one thinker and a quote, Mahatma Gandhi and a quote, which enriched our overall case study conclusion. Okay, there are few more thinkers you can add if you needed. That's why I have given you thinkers and the philosophers separate list. You can talk about Mahatma Gandhi. Welfare of the weakest is the true measure of the social progress. Okay, this quote you can use. Okay, then I have given you multiple alternatives here, so you can use this also. Okay, then you can use the Plato. What Plato says, ruler must govern with the sense of justice, that can also be used. Okay, then John Rawls, social justice means distributing resources for the benefit of the weakest. जैसे हमने महात्मा गांधी कंक्लूजन में यूज किया, कोई भी यूज कर सकते हो इसमें से.
ओके, दिस इज एन अल्टरनेटिव लिस्ट, ये नहीं कि ये सारे दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर, आंसर खत्म हो गया कंक्लूजन के साथ, दिस इज योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यू कैन यूज दिस थिंकर्स in your theory also. Like these are the different types of ethical values that you have to use in your case study. You have to write about responsibility, moral and legal accountability, transparency, empathy for the weaker section, integrity towards your job, and justice for the weakest, justice for the victims. All these ethical values also you can use in your case studies. ओके, सो इथिकल वैल्यूज भी यूज करनी है, थिंकर्स भी यूज करने हैं, और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन भी फुलफिल करना है. समझ आई केस स्टडी? ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे इन सच केस स्टडीज यू हैव टू यूज योर ओन नॉलेज अलॉट, बिकॉज केस स्टडी में उतना कुछ दिया नहीं गया है. यू हैव टू यूज योर ओन नॉलेज अलॉट. जो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है ना, जहाँ पे खुद का नॉलेज थोड़ा सा कम है और केस स्टडी में ही नॉलेज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है. ओके, सो जस्ट सी. ओके, देखते हैं केस स्टडी. नेक्स्ट केस स्टडी, फर्स्ट वी विल रीड द केस स्टडी, अंडरस्टैंड इट. आई विल टेल यू कि किस तरह का उसका पूरा जो आंसर का जो फॉर्मेट होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए, एंड देन वी विल राइट द कंक्लूजन. ओके, सी व्हाट इज देयर इन द केस स्टडी. बड़ी केस स्टडी है, ऐसी जब भी बड़ी केस स्टडी एग्जाम में आती है, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम टू रीड. दैट इज व्हाई आई टोल्ड, बहुत लंबा पेपर होता है, बहुत बड़ा पेपर होता है, क्योंकि फास्ट लिखना होता है. 15 minutes now you have to read it, understand it, you cannot read it again. तुम खुद समझ रहे हो 15 minutes में तुम ये दो बार नहीं पढ़ सकते सेम केस स्टडी. सो फर्स्ट टाइम ही जब पढ़ रहे हो तभी तुम्हें अंडरलाइन करना है या इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है. ओके, सो सी व्हाट इज देयर इन द केस स्टडी. अ लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप, आई एम रीडिंग इट फॉर यू. ओके, समझ लेते हैं केस स्टडी को, देन आई विल गिव द टाइम टू राइट. ओके, ऐसी केस स्टडी में लिखना आसान है. द रीजन इज सब कुछ केस स्टडी में दिया हुआ है, थोड़ा सा अपना थिंकिंग लगाना है, इथिकल थिंकिंग. केस स्टडी में डिटेल्स दिए, उसी के हिसाब से यू हैव टू राइट द आंसर. द लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप इज एंगेज्ड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल. एक लार्जेस्ट ग्रुप, लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप्स है, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाता है. दे प्रपोज टू सेट अप एडिशनल यूनिट, एक और उनको फैक्ट्री बनानी थी. ड्यू टू एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट मेनी स्टेट्स ऑलरेडी रिजेक्टेड द प्रपोजल, बट one state government, setting aside all the opposition, granted permission to establish this unit near the city. Problem यहीं से start होता है, near the city, and it is a chemical fact. Okay, and near the city. Then what happens? The unit was established 10 years ago, 10 साल हो चुके हैं, and had been operating at the full capacity until recently. The pollution, प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं नाउ. ओके, द पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट्स हैड अफेक्टेड द सॉइल, वाटर एंड द क्रॉप्स. समझ रहे हो प्रॉब्लम्स? ऐसी केस डिटेल में दिया गया है सब कुछ, ऐसी केस स्टडीज में सब कुछ डिटेल में दिया गया है. और जब ऐसे डिटेल में दिया होता है, व्हाट एवर आंसर यू आर राइटिंग, यू हैव टू कीप यूर सेल्फ लिमिटेड टू द थिंग्स विच आर गिवन इन द केस स्टडी. ओके, सो पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट्स, एज अ रिजल्ट the health of both humans and the animals. सेकेंड प्रॉब्लम आ गया अभी, पोल्यूशन के साथ साथ अभी हेल्थ का भी इश्यू आ गया. हेल्थ ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर सिवियरली इंपैक्टेड. देन दिस लेड टू द सीरीज ऑफ एजिटेशंस इन्वॉल्विंग थाउजेंड्स ऑफ द पीपल. अब ये तीसरा प्रॉब्लम्स. ओके, एजिटेशंस भी हो रहे. मैंने कहा था ना, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स निकालोगे उतने ज्यादा सॉल्यूशंस दे पाओगे. एजिटेशन स्टार्टेड, created a law and order situation necessitating strict police action. अब police action भी हो रही है. Following public outrage, the state government ordered to closure of the factory. फैक्ट्री हो गई बंद. Now problem यहाँ पे खत्म नहीं होता फैक्ट्री बंद होने पे. Now see, due to closure of the factory, अब closure की होने की वजह से भी अभी problems है. Due to the closure of the factory, not only workers' employment there, but also many workers employed in associated ancillary units become unemployed. मतलब वर्कर्स तो अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं. ऐसी इंडस्ट्री जो उस इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट थी, वहां के भी वर्कर्स अभी अनएम्प्लॉयड हो गए. राइट, जैसे कि उस इंडस्ट्री को अगर कोई मटेरियल सप्लाई करने वाली इंडस्ट्री हो या मशीन सप्लाई करने वाली इंडस्ट्री हो, उसके भी वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. देन मोर एवर अदर इंडस्ट्रीज दैट डिपेंडेंट ऑन दिस केमिकल्स
वेयर आल्सो सीवियरली अफेक्टेड। ऐसे भी इंडस्ट्रीज जो तो उस केमिकल्स पे डिपेंड्स थी, वो भी सीवियरली अफेक्टेड होगी। ओके, तो प्रॉब्लम बंद करने से भी तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। शुरू रखो तो प्रॉब्लम है, बंद करो तब भी प्रॉब्लम है। ओके, केस स्टडी ऐसी होती है जहाँ पे दो एक्सट्रीम्स होंगे, शुरू भी रखो तो प्रॉब्लम है, बंद भी करो तो प्रॉब्लम है, अब कुछ तो बीच वाला सॉल्यूशन निकालना है। ओके, एज अ सीनियर ऑफिसर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग दिस इशू हैज बीन एंट्रस्टेड टू यू। हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन? कैसे हैंडल करोगे, ये तुम्हें पूछा है। ओके, अभी तुम्हें इसमें क्या क्या दिया गया है? यू हैव गिवन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कई सारे। ओके, सो फॉर्मेट भी ऐसे ही रहेगा। अभी प्रॉब्लम्स देखो, मैंने यहाँ पे राउंड किया, अंडरलाइन किया, सारे प्रॉब्लम्स हमें अभी पता है। ओके, यू कैन नॉट रीड इट अगेन। तब भी जब भी पहली बार पढ़ रहे हो, अगर चाहो तो यू कैन रीड इट अगेन, अंडरलाइन द प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर्स। You have to write the introduction, then you will write the stakeholders, and then jumping to the answer, you have been asked how will you handle the situation. Stakeholder के बाद unnecessary कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा क्वेश्चन क्या है उसके आंसर पे जंप करना है आफ्टर द stakeholders, and directly you are writing how to handle the situation. अभी तुम्हें solutions देने हैं। जितने प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए गए हैं, खुद सोचो कि ये प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल किए जा सकते हैं। यू हैव टू थिंक। ओके, इसीलिए कहा था केस स्टडी, यहाँ पे ही तुम्हारा ऑफिसर का माइंडसेट निकल के आता है। ओके, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इन माय क्लास, इट्स नॉट दैट आफ्टर द सिलेक्शन यू विल गेट द ट्रेनिंग एज एन ऑफिसर, कि ये मत सोचो एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर ऑफिसर कैसे काम करते हैं पता चलेगा। नाउ द कमीशन एक्सपेक्ट यू टू बी थिंक लाइक एन ऑफिसर फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। ट्रेनिंग शुरू है तुम्हारी, सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग शुरू है, अभी सोल्यूशन बताने हैं प्रॉब्लम्स के। Okay, you have to write the solution, then at the end you will write the conclusion. समझ आया? Okay, चलो let's start writing. Introduction, stakeholders, directly what you will do, how will you handle the solution, you have to write the points, then at the end you have to write the conclusion. समझ आया? Okay, start writing. You have to think. Problems हमें समझ आ चुके हैं, but for every problem you have to give the solution now. केस स्टडी समझ आ रही है? नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इट? ओके, अगर केस समझ आ रही है तो फिर सॉल्यूशन तो दे ही पाओगे।
minimum 6-7 problems are there in this case study. So आराम से उतना तो लिख पाओगे. No, it's a dilemma situation, of course. Case study is about a dilemma always. Okay, case study will always give a dilemma, and that day I will ask you to solve the dilemma. Because you cannot close it, you cannot keep it open. So it's a dilemma solution. So you have to give the third solution. And the solution should be practical enough. यानी कि बीच बीच में बंद करो, nothing like that. Okay, it should be a practical one. Okay, let's discuss. Okay.
See, first you will write the introduction. So what have been told or what have been given in the case study, you will write here. It is based on the conflict between the development and the environment, right? What is there in the case study? It is the conflict between the development and the environment, and it clearly reflects the lack of ethical values in industry friendly policies. Like the state government has given the permission, and the permission is given even the near to the city. So you are industry friendly, but you lacks the ethical values, right? So this case is a major test of the ethical values of environmental justice, administrative accountability, equity, social sensitivity and sustainability. So in the introduction itself you have told what is the case study, but also you have given the conflict between the different values. What are the different values which are involved here? Then you have to write the stakeholders. What are the different stakeholders? Here also you will just write the names. Okay, which are the different stakeholders are there. First, it is the local citizens and the farmers are the stakeholders. Okay, because we have seen that the health of the people is also getting affected. We have seen also the impact is also on the crops. So farmers also stakeholders are there. Then factory workers, of course, they are getting unemployed, so they are also affected. Ancillary industries, dependent industries, they are also stakeholders. State government has given the permission, so state government is also involved. Environmental activities and the NGOs, and environmental activists and NGOs, those who are supporting the people who are protesting. Corporate companies, of course, there, because the company is there who is doing all these things, so that is also a stakeholder. Police administration, because there is a lot of law and order problem that is happening because of the people protest. Okay, so all these people are the stakeholders here. Now you have to give the solution. See, solution can be multidimensional. First you have to give the immediate solution, immediate measures. Okay, what can be done immediately on the spot? Some measures can be immediate, some can be long term. So first we will talk about immediate measures, then we will talk about policy support to the unemployed, because some people are also unemployed. So you have to give the policy support to them, and then we will talk about the long term measures. See, whenever there is a problem has been given, if you think that you can give the immediate solution also, and you can do the long term, because in this case study you cannot just give immediate, long term bhi deni padegi. You have to take care that such industries which are not good with respect to environmental conservation, or that such polluting industry, they should not be set up near the city. You should be careful about it. Okay, so such things should not happen in the future. For that you have to give the long term measures also. So first you will give the immediate, पहले immediate देना है, long term last में लिखना है हमेशा जब भी long term measures होंगे. Restoration of the polluted area, you have to do that first. Okay, because सब area polluted हो चुका है, वहाँ का air, वहाँ का पानी, वहाँ की ज़मीन, everything has got polluted. So you have to restore it first. So coordination with the environment department, conduct of environment audit to detect toxic elements in the water, soil and air. Apply polluters pay principle, that means recover all the cost of all such restoration from the company itself. Polluters pay, जितने पोल्यूशन किया, मतलब कंपनी से सारा खर्चा निकालो. ओके, गवर्नमेंट नहीं देगी, क्यों देगी गवर्नमेंट, कंपनी ने किया हुआ है. थर्ड, implement measures such as tree plantation, water conservation, bioremediation. सब किस पे खर्चे पे? Company will pay for everything what the government is doing there. Understood? Polluters pay principle. Okay. Then health services and rehabilitations, because we know health services people are getting affected, so you have to do that. Organize free health checkup camps, establish permanent health centers, because the people affect some health of the health of the some people is affected permanently. Okay, so permanent health camps भी होंगे, health checkup भी होगा. Special insurance schemes भी launch करनी पड़ेगी. Those people who are affected, they should get the insurance also. Provide medical aid to affected family. किसके खर्चे पे? Company will pay. Government will not pay here. The company will pay. Polluter pay principle. Okay, so this is a kind of a punishment for the company also. Then you have to give the policy support to the unemployed people also. So many people unemployed. So for that you have to start new employment opportunities, like give skill mapping,
Okay, give skills to the people, those understand other people like the unemployed people what the skills have, you provide them jobs according to their skills, create jobs in new green industries or the service sector, नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करो, ग्रीन इंडस्ट्रीज मीन्स द इंडस्ट्रीज विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऐसे इंडस्ट्रीज हो गया, सर्विस सेक्टर होगा, वहां पे उन्हें जॉब दो. रीडायरेक्शन ऑफ ancillary industries, those who are dependent on those industries, so redirection, how? Diversification, provide subsidies and incentives to shift to other products. अगर किसी एक प्रोडक्ट बना रहे होते तो उनको सब्सिडी दो कि तुम कोई और प्रोडक्ट बना लो, वहाँ पे जो अदर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाएंगी उनके प्रोडक्ट्स बना लो. प्रोवाइड सब्सिडीज टू देम, प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू देम. प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, so that those people who are getting unemployed because of the closure of the ancillary industries, they will get the jobs here. Okay, what long term measures, यहाँ पे कुछ immediate measures ये भी अभी लिखने हैं जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है. First thing, you have to talk with the people, okay, and ensure them to take the measures so that they will stop the protest, so that there will not be a law and order. ये भी करना पड़ेगा immediate में. Okay, second thing, you have to immediately issue the order that this particular industry that will never be opened. Okay, ये करना पड़ेगा स्टार्टिंग में. You have to give the warning, ये ओपन नहीं होगा तभी तो लोग प्रोटेस्ट छोड़ेंगे. Immediately you have to do. लॉन्ग टर्म मेजर्स तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि ऐसी चीजें ना हो कभी. ओके, एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी थी नहीं, इसलिए तो फट से तुमने इंडस्ट्रियल लाइसेंस दे दिया उसे सिटी के पास. अगर एक पॉलिसी होती तुम्हारे पास अच्छी जिसमें अगर लिखा होता कि नियर टू द सिटी यू विल नॉट गिव एनी परमिशन, सो दिस विल नेवर वुड हैव हैपेंड. सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुड ऑलवेज बी देयर. To make the environmental clearance process transparent, how the clearance has been given, keep it transparent. Then redesign policies under the sustainable industrial zone framework. Sustainable industrial zone framework हमारे पास है, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाओ. उसमें ये दिए गए सारे मेजर्स दिए जाते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री बन रही है, so what measures the industry should take so that it will not do any kind of a environmental destruction. Then मैंडेट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कि जो भी तुम्हारा पोल्यूशन निकल रहा है, व्हेन यू आर डिस्चार्जिंग इट टू द एनी वाटर रिसोर्स और एनी रिवर और एनीथिंग, ओके, सो इट शुड बी क्लीन कंप्लीटली. ओके, द polluted liquid should not be discharged into any resources, neither water resource neither a land resource. कुछ लोग वाटर को नहीं करते तो लैंड में कुछ बना के, थोड़ा सा कुछ होल बना के उसमें सारा डिस्चार्ज कर देते. यू कैन नॉट डिस्चार्ज एनीथिंग लाइक दैट. ओके, सो सच पॉलिसी शुड बी देयर, सच टेक्नोलॉजी शुड बी देयर. पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड द ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम एडवाइजरी कमिटीज इंक्लूडिंग सिटीजन्स, लोकल स्टाफ, गवर्नमेंट बॉडीज एंड द एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स. ओके, जब भी गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी बनाएगा, सो पीपल्स पार्टिसिपेशन शुड बी देयर. Advisory committee should be there to advise the government with respect to any such policy, something like this disadvantaged sections, the poor people here, the people who lost the jobs, disadvantaged section. Okay, Mahatma Gandhi, ये famous quote you can use and which actually completely fits with the case study. It says that the earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. This is a famous quote and this is exactly fit to your case study. In conclusion, you can use it. Okay. Yes, such quotes also you can use, of course. Okay. यहाँ पे कुछ ethical values, more ethical values भी दिए गए that you can use in the case study, that is environmental justice, accountability, participation justice and sustainability. So understood how you approached introduction you wrote, then you wrote the short term, then you wrote the long term. Okay, and you have given the sustainable solution. तुमने ओपन करने के लिए भी नहीं कहा या क्लोज करने के लिए भी नहीं कहा, कंप्लीटली तो क्लोज ही रखी हमने. सिटी के क्लोज तो तुम रखना ही पड़ेगा तुम्हें. ओपन भी करनी है तो आउट ऑफ द सिटी, नॉट इन द सिटी, एंड फॉर दैट यू नीड अ एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉन्ग टर्म पॉलिसी. दैट इज इंपॉर्टेंट. हमेशा याद रखना है, शॉर्ट टर्म भी देना है, लॉन्ग टर्म भी देना ही है. डोंट स्टॉप विद द शॉर्ट टर्म. यस,
Yeah, you can import. If the case itself is saying that the state government has given the permission, despite all the other states were rejecting it, so you can criticize. No, you can regional development, but it cannot be on the cost of the health of the people, the lives of the people. No, 10 वर्ष वाट का पाली? Why people are waiting? Because the impact started after appearing after 10 years. Long term impact. It will not happen कि you started the factory today and the impact started tomorrow. Okay, impact started. The land impact, it took so much of time to affect the people. People could not understand it at the start. Okay, so you can criticize the factory also, you can criticize the government also. Okay, and you are particularly, you are not in general, you are not criticizing the government. You are criticizing with respect to the case study. So that is fine, you can criticize. Okay, and you have to criticize because they have done something wrong, so you have to criticize. Okay, next case study, just a simple one, small case study again. Okay, so see, small case study है, बहुत छोटी case study है और very easy to understand. What the case study says, first we will read the case study, understand what is the demand of the case study, and then we will write then we will see how to write. First, you are the head of human resource department in an organization. Okay, you are now a head, तुम्हारा एक position दिया गया है, you are the head, human resource department. Then one day, while on duty, a worker dies. Then a deceased worker family demands the compensation now. Okay, then however the investigation reveals the worker was under the influence of alcohol at the time of death. मतलब अब यहाँ पे पता तो है कि वर्कर की डेथ क्यों हुई है, because worker was under the influence of alcohol, but family is demanding the compensation now. Hence the company refuses to provide the compensation. As a result, other workers in the company have gone on strike demanding the compensation for the deceased worker family. अब compensation नहीं दे रहे तो सारे workers अभी strike पे जा रहे हैं कि compensation देना पड़ेगा, right? ऐसी चीजें होती है. Okay, that's a normal thing. Then the chairman of the company's management board has asked your recommendations in this matter. क्या करना चाहिए? Because you are the head of human resource department. Okay, so तुम्हें पूछा गया क्या करना चाहिए. Now the question is, what recommendations will you give to the management? मतलब solution ही देना है, क्या करना चाहिए. Then discuss the advantages and disadvantages of the each recommendation. समझ रहे हो? Recommendations देना है, हर recommendations के advantages, disadvantages. How many recommendations you can give actually? Around 3 to 4. Okay, 3 to 4 recommendations. हर किसी का advantages, disadvantages. Structure is same. Introduction, stakeholders you will write. Then you will write the recommendation. First recommendation, advantage, disadvantage. Second, advantage, disadvantage. Like third, like fourth, and then after that you will write the conclusion. Understood? So you have to think of different solutions now, and you have to think like how this will help and how the problematic it will be. Okay. So see, out of 2 recommendations, out of the 4 or 5 recommendations, whatever you are giving, 2 you already know. 1, give the compensation. Second, don't give the compensation. Okay. 2 you already know. Okay. So you can write the 2 advantages, disadvantages, you can write for both. More than that, now you have to think. 2 तो तुम्हारे पास पहले ही है, ऊपर से 2-3 अलग सोचने हैं जिसके तुम्हें देने हैं recommendations, advantages, disadvantages. Understood? So 2 I already told. 2 तो पता ही है. हर केस स्टडी में 2 सॉल्यूशन तुम्हें पता होता है. इन एवरी केस, इसके पहले वाली केस स्टडी में भी तुम्हें 2 सॉल्यूशन पता थे, या तो बंद करो या तो खुला करो. 2 are extremes, but we don't need extremes. We need some middle path. Okay? तो चलो, write down. चलो फटाफट लिखो क्योंकि इसके बाद 1 more case study we have to see.
Are you able to find solution or not? Not yet? Right. Just 2 minutes, then we will discuss. Like, you don't have to make a separate heading for that. No. Separate heading is not required for writing. In answer, your complete answer should be in ethical dimension. You don't have to make a separate heading and write it separately ethical dimension. That is not required. Okay. Whatever the ethical values you are writing, you should write within the answer itself. If it is mentioned clearly that you identify the ethical dilemmas, then you have to write the separate heading for writing ethical dilemmas. Legal obligation versus ethical frustration. याच्यामुळे बाकीचे उत्तर लिहायला आपण See, if it is asked, okay, it is not clearly saying that you have to write the ethical dilemmas. Okay, if in so many questions it is given, identify the ethical dilemmas, then you have to write the ethical dilemmas. But it is not specifically asking you to write, because what is happening, if you write the introduction, then you write the stakeholders, then after that if you write the ethical dilemmas, more than one page you are writing which is not asked. Okay, even if you are writing, it should be just two lines. You cannot write it more, because if one page has been gone out of 3 or 4 pages, you are writing 25 to 30% which is not directly asked in the questions. That will compromise your answers. That is why I tell you, after stakeholders, directly jump to the question. Well, already half of the page you have consumed in introduction in the stakeholders. Okay, so let's discuss what can be done, what can be the recommendations here. So you are facing difficulty in finding out the recommendation. Let's see what can be done. First, introduction. Now we know what can you do in introduction. In brief, we are talking about the values. Okay, like we have given in brief, on the one hand there is an enforcement of institutional discipline policies. Second, there is a fundamental question of humanity and the compensation. Okay, now we have given what is there in the case study, and then we have given some values like justice, empathy, accountability and professional prudence while making the decision. You have to make the balance out of it. Okay, then stakeholders. Which are the different stakeholders here? First, the deceased employee and his family are the stakeholders, because family is demanding the compensation now. The workers are on protest to demand the compensation. Then workers and their unions who are protesting, who are going to the strikes. Company management and the chairman who asked you to make the decision or give recommendations. Head of human resource department, you yourself is the head of human resource department. Society and the media, of course, in general, or society in general you can write, which are also impactful. Then recommendations, options you have to write. First, recommendations you are giving, completely deny it as per the company policy. I told you, you can directly deny it. Okay, so you completely deny, but there are some advantages and disadvantages for everything. If you deny, what are the advantage? You followed the company policy.
and the legal framework, because company policy is clear. If it's your mistake, we cannot provide you compensation. The worker was consuming the alcohol, so that was the worker's mistake. So you compliance with the company policy, you prevent future misuse and the exceptions. You ensure that in future this will not happen. Any worker with his mistake will not ask for the compensation. Okay, but there are disadvantage, because workers resentment will increase. They are already going on the strike, that will lead to more problem now. Okay, factory may get closed and there can be loss of money also, loss of profit also. Production and the company reputation, that is also a problem, because the message in the society will go that the worker died and no compensation has been given. Then decision may be viewed as a morally harsh. Okay, so that is actually a problem. So what more you can do? Option 2 can be provide limited compensation. थोड़ा तो compensation दे ही सकते हो, provide the limited compensation, right? So advantages can be there. वही जो पहले वाले disadvantages reverse हो जाएंगे. Okay, so advantages help maintain the balance among workers, may help ending the strikes. Strike खत्म हो सकती है, दे दिया compensation. ठीक है. Then preserve the moral image of the company. वही जो पहले disadvantages थे अभी advantages बन गए compensation देने की वजह से. Align with the social responsibility, CSR policy. Okay, corporate social responsibility, you are providing the money. Then disadvantages, risk of encouraging undesirable behavior. Future में भी ऐसा हो सकता है undesirable behavior, that is a risk. May set a precedent for similar future demands by the worker, that will be a bad precedent for the worker, that may happen. Okay, so option 3 can be compensation and rehabilitation package for the family under the corporate social responsibility. You know CSR funds, corporate social responsibility, the 2% of last 3-year average profit every company has to spend for public welfare. So from that fund you can provide it. For example, fund for children education, job opportunity for wife, and limited financial aid, that can be done. Okay, advantages same, ethically sound, it looks like ethical, positive from the lens of the social justice, and it sets an example for CSR. तुमने CSR fund use किया है, so your company is not in a net loss, because anyway you have to spend the CSR money. Okay, so you are spending the CSR money. And humanitarian administration, boost workers morale and strengthen the trust in the economy. Disadvantage, financial burden for the company, but that is of course a CSR fund. Okay, make policy flexible, which may weaken it. Same disadvantages, words are different, same disadvantages there. It leads to a bad precedent. Okay, then deny compensation, but initiate training and de-addiction process. De-addiction क्यों लिया गया है? Because workers was an addiction. So एक है तो मतलब कई और भी हो सकते हैं, and this may happen in the future. So उसके लिए de-addiction करना पड़ेगा. अब वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, so that such incidents should not happen in the future. So ट्रेनिंग भी दे दो उनको. Okay, and what you have denied the compensation here. So advantages, long term benefits, raises awareness about worker safety, because सबको ट्रेनिंग दे दी, so worker safety is ensured. Create positive institutional environment around sobriety. Disadvantages क्या है इसके? Do not provide immediate help, ये भी तो है, और strike तो चल ही रही है फिर. Okay, so net you are giving the final recommendation, a composite approach. इन चारों को मिला के composite approach तुमने दिया, क्या किया जा सकता है? First, instead of direct compensation, provide some financial aid under the CSR. थोड़ा सा कुछ पैसा दे दो for the humanity and the social responsibility. More, you can provide a low skill job opportunity for the workers widow. जिसकी डेथ हुई है उसकी विडो को लो स्किल अपॉर्चुनिटी जो भी है, कोई जॉब भी दे सकते हो कंपनी में, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन. थर्ड, लॉन्च डी एडिक्शन एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. फोर्थ, इनिशिएट ओपन डायलॉग विथ लेबर यूनियन टू रिजॉल्व द स्ट्राइक एमिकेबली, कि भाई दे रहे हम, जॉब भी दे रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं डी एडिक्शन, फाइनेंशियल एड भी दे रहे हैं, डिस्कशन करो, स्ट्राइक खत्म करो. Okay, so you should have a balanced approach, and you should balance the values of justice, humanity, accountability, empathy, and administrative wisdom. Okay, so at the end there is a conclusion here. So conclusion is just like a balancing. Okay, so in this case merely implementing rule is not enough. तुम ये नहीं कह सकते कि हमारा रूल है और हम ऐसे ही चलेंगे, स्ट्राइक चल रही है
and in ethical way also that seems strong, because the widow, now she is a widow, she is dependent, okay, there is no breadwinner here, so she is dependent, her life is miserable, maybe her husband, it was the mistake of her husband, but her life is reasonable, so you cannot neglect it. That is why we decided to give her a job if it is possible, right? So humanitarian administration is not just based on law, but it is based on understanding also. Okay, while denying compensation, it is extremely important to mindful of social responsibility also, company reputation also. Okay, so human resource management is not merely administrative work but a reflection of a value based leadership. तभी हमने ये सारे डिसीजन लिए, वी हैव मेड अ बैलेंस, कंपनीज जो भी पॉलिसी एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इन सब के बीच में हमने यहाँ पे बैलेंस बनाया है. रिलेटेड थिंकर्स, यहाँ पे कौन से थिंकर्स कोट किए जा सकते हैं? ज्योतिराव फुले, ओके, एम्फसाइज कंपेंसेशन एक्शनेबल जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, यहाँ पे ऑप्रेस्ड है, वर्कर्स, द विडो, सो जस्टिस फॉर देम. जॉन रॉल, theory of justice, fairness, we already seen at least advantage. Mahatma Gandhi, think of the needs of the last person before making any decision. You have to think, policy है ठीक है, but what about the family, deceased family, widows, his children, what about that? You have to think about the last person before making the decision. Then Peter Drucker is there, employees are the true strength of the organization, should not be seen as merely as the laborers. Okay, so any quote you can use in your conclusion. What values we were talking about here? Justice, empathy, accountability, service orientation, integrity and the transparency. Understand? So you have given the practical solutions here, but remember, you cannot clearly say that I will deny it but just because company policy. It is ethics paper, so it is expected from you कि चलो पैसे का लॉस भी हो रहा है, कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, बट यू शुड बी इथिकल. ओके, इसीलिए हमने कहा कि पैसा तो देना चाहिए, कंपनी का लॉस हो, चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन भी आ रहा है फाइनेंशियल, पर पैसे तो देने चाहिए बिकॉज द फैमिली इज देयर. बट यू कैन नॉट जस्ट गिव द मनी. हमने डी एडिक्शन भी किया, ओके, उसके लिए हमने सेफ्टी मेजर्स भी लिए, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सो दैट ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट. देन द लास्ट वन, फास्ट, ओके, केस स्टडी है, इंपॉर्टेंट केस स्टडी है. ओके, कई बार सेम टाइप ऑफ केस स्टडी मल्टीपल टाइम हैज बीन आस्क्ड. सो देखो फटाफट क्या है केस स्टडी में दिया हुआ, फटाफट देखते हैं. केस स्टडी डिटेल दी गई अगेंस्ट, दिस इज अ डिटेल केस स्टडी. अगेन सी व्हाट इज द थिंग हैज बीन गिवन. राकेश, इट इज अबाउट द राकेश नाउ. राकेश is a district level responsible officer and he is interested and is trusted completely by his supervisors due to his integrity. So अच्छा officer है. Okay, then therefore the government has entrusted him with the responsibility of identifying beneficiaries under the healthcare scheme for senior citizen. एक senior citizens की स्कीम है. राकेश का काम क्या है? बस बेनिफिशियरी कौन है इनको आइडेंटिफाई करना है, so that we can give the benefits. सो फॉलोइंग कंडीशंस दी गई है ऑलरेडी, किसी भी स्कीम्स की जो स्कीम्स है उसके बेनिफिट्स. फॉर एज शुड बी एटलीस्ट 60. सेकेंड, रिजर्व कैटेगरी, बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी. थर्ड, एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज. 4, प्रोग्नोसिस आफ्टर ट्रीटमेंट शुड बी फेवरेबल. मतलब जो सोल्यूशन, प्रोग्नोसिस मतलब जो भी व्हाट यू कैन से दैट, ओके, द सोल्यूशन after the treatment, if you are treating the person, the problem should get resolved, the health problem should get resolved. Only then giving money is important. Okay, then is significant improvement in the quality of life of the beneficiary is expected after the treatment. So beneficiary की लाइफ अच्छी होनी चाहिए ट्रीटमेंट के बाद, तभी हम पैसे दे सकते हैं. अब इसमें होता क्या है? once an elderly couple come to Rakesh office with their application, both have lived their life in a village of their taluka since birth. The elderly man is suffering from the rare disease. तो qualified तो हो रहा है आदमी, okay, compensation के लिए. He is affecting from the rare disease, okay, from the large intestine, due to which experiences frequent severe abdominal pain and unable to perform a physical labor. Then this couple has no children to support them. मतलब अभी देना ही पड़ेगा क्योंकि चिल्ड्रेन भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं कर पा रहा है, लिखा है खुद कुछ काम नहीं कर पा रहा है बीमारी की वजह से. द स्पेशलिस्ट सर्जन्स द कंसल्टेंट इज विलिंग टू परफॉर्म द सर्जरी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो सर्जन तो चलो रेडी है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करने के लिए. हाउएवर कपल वुड हैव टू बियर अबाउट 1 लाख रुपीज फॉर द मेडिसिन.
मेडिसिन का खर्चा है 1 लाख रुपए, हॉस्पिटल एंड अदर रिलेटेड एक्सपीरियंस, इसका 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। द कपल फुलफिल्स ऑल क्राइटेरिया, सारा क्राइटेरिया एक्सेप्ट वन क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया इज बिलोंगिंग टू रिजॉर्ट कैटेगरी, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू द रिजॉर्ट कैटेगरी। क्राइटेरिया में तो लिखा है रिजर्व कैटेगरी भी चाहिए, रिजॉर्ट कैटेगरी भी चाहिए। However, if they receive financial assistance, there will certainly be significant improvement in their quality of life। ये भी दिया गया है कि हाँ क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं कर रहा है, बट पैसे अगर मिल गए तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, सो पैसे तो जरूरी है। सो इसमें पूछा गया इन दिस सिचुएशन व्हाट रोल शुड राकेश प्ले, राकेश को क्या करना चाहिए। समझ आ रहा है? एथिकल डायलेमा, हर केस स्टडी में एथिकल डायलेमा ही है। ओके, दो एक्सट्रीम सोल्यूशन है, वी डोंट नीड एक्सट्रीम्स। वन एक्सट्रीम सोल्यूशन इज गिव द बेनिफिट्स, बट द थिंग इज पॉलिसी रिजॉर्ट कैटेगरी नहीं है, रिजॉर्ट कैटेगरी उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, राइट। सेकेंड एक्सट्रीम इज डिनाई इट, यू आर नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, वी आर डिनाइंग, बट द पर्सन इज एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम, तो उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसे वापिस नहीं बेच सकते। एज ए ह्यूमैनिटी परस्पेक्टिव यू कैन नॉट डू इट। सो एक्सट्रीम्स आर देयर, मिडल पाथ वाला सॉल्यूशन देना है। क्वेश्चन समझ आया? अंडरस्टूड द केस? ओके, सो फटाफट जस्ट राइट इट, फिर हमें डिस्कशन भी करना है इसका। 5 to 7 minutes, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनको बेनिफिट दिया जा सकता है।
See, here you have to be creative. It's not like GS paper. Some facts are there. यहाँ पे think करना पड़ता है. Every new case study will come, new situation will be there, right? तो अभी ऐसा नहीं है कि you have done 10 case studies तो उसी में से आएगा. New situation, new problem, new solutions. So you have to develop the thinking ability. That's the only thing. You have to write what he can do. Options, and you have to write what he will do. Like in a previous question we have written, okay, what he can do, what he will do. Everything is fair. Yes, right. That is can be one of the solution. No, don't write scheme name. If you know the scheme exactly, then write it. Okay, you can write the name also. Yeah, Jeevan Jyoti. Okay, but Jeevan Jyoti is not about that. Jeevan Jyoti is providing insurance. Okay, it's not about that. If you die, then you will get the insurance. So यहाँ पे नहीं मर रहा है वो अभी. He is still alive. Yes, you can do that also. Yes. So many things you can do. You just have to think about क्या क्या कर सकते हैं. Okay, राकेश भी पे कर सकता है if he wants to. Yes. But the thing is, he can do it for only one time. If any other couple comes, so Rakesh cannot be that much rich. Crowdfunding. Yes, he can do the crowdfunding also, right? Yeah, surgery is anyway free. Okay, medicines तो गवर्नमेंट में भी लगेंगे. If you write to name of the scheme, you can write about Ayushman Bharat. Yeah, you can. Yes, yes, of course you can. There are many ways you can help them. You just find out the ways how you can help. Special category unreserved Yeah, that is means enrolling in any other scheme. That's yeah. Not physical. Promote means. Yeah, of course. But the thing is, yeah, that's not the big issue. The big problem is giving him immediately. You should give give him something.
Okay, chalo, let's discuss what can be done. See, you already have told me so many options. Same options are there, okay. Only that you have to explain it, like enroll in other schemes, asking to the senior whether what can be done, okay, giving money from himself, but don't write such options. The thing is that he can do it just for once, he cannot do it again and again, okay. And even examiner know you will never do this. Okay, you don't have that much money कि 1 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए. Okay, सर्विस में हो तुम, इतने अमीर होते हैं तो शायद उधर कोई बिजनेस कर रहे होते हैं. You are in the service, 1 लाख रुपए तो दे नहीं दोगे तुम. Okay, it's more than your 1 month salary. Okay, so in the introduction you are just giving the case like these, all these things are happening. Okay, so you have to balance the law with the human touch of Antyodaya, service to the poor, or like service to the disadvantages, Antodaya. Okay, that is unavoidable, you have to help them. Okay, so surgeon fees भी दे रहा है, फिर भी 1 लाख रुपीस का खर्चा आ रहा है. So of course it is going to create a moral dilemma for the Rakesh. Okay, so that much in introduction you are talking about. Stakeholders we already know, elderly couple is there, Rakesh is always there. Okay, health department is there, other eligible beneficiaries and the taxpayers. Okay, because other beneficiaries भी है, उनका भी पैसा यहाँ पे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता. So that's also the thing. So ethical analysis, what you can do? First, you can reject it as per the policy. Okay, you have that option also, that you are not fulfilling the criteria. So there is a Kant philosophy. Remember the Kant philosophy we have discussed? Kant says that do your duty, don't think about the consequences. So here the Kant philosophy is, okay, if there is a policy, you follow the policy, don't think about the consequences. But you cannot completely go with the Kant here. Here the Gandhiji also is there, who talks about Gandhian talisman. Gandhian talisman, what it says? You have to serve the last person. Your decision should be like that, to think about the last person, the most poor person, most disadvantaged person. Okay, so you have to be sensitive about the disadvantaged section, that Gandhiji says. So you cannot completely reject it, that's the first thing. Second, raise the required funds entirely through CSR or public participation. That is also the way. Okay, so you are asking the people to pay, or you are asking any civils, any industries to pay through CSR also. There are many industries who are willing to pay through CSR funds. Anyway, they have to spend the money, the industry CSR fund they have to spend. They cannot keep the fund with themselves, they have to spend the money. So you are asking the industries, or you are asking the people, you are crowdfunding the money. Okay, you can do that, entire money 1 lakh rupees. Next option you have emergency district fund also. The district magistrate also has the district fund, emergency district fund. So district magistrate can use the emergency district fund also, but depends if he has that much fund. If he has that much fund, he can use it. If he don't have the fund, that can lead to the again problem. Okay. Then next thing is request special exemption at the state level. You are asking the state government, okay, to give the special exemption for this particular case, or in any future case, some future case, okay, so that we can provide them, because there is a necessity to provide them. Okay, so practically what you can do, first, prompt verification of the documents and the medical reports. You have to do that. Okay, जो भी couple आया है, जो भी वहाँ पे person who is actually in problem, verify their documents, verify their reports. As an honest administrator, Rakesh must thoroughly verify the financial and clinical documents to establish the genuine need. First understand कि ये genuine case है. You have to do that. Then immediate disbursement through the emergency fund. Emergency fund से कुछ पैसा दे दो. If giving 1 lakh rupees is enough, then give 1 lakh rupees. If you have that money in emergency fund, give that. If you don't have money, there are other options also. What are other options? CSR funds, or take the help of the NGOs for crowdfunding the money. Okay, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो यहाँ पे आना है, CSR फंड का यूज करना है, या NGO की हेल्प लेनी है टू गिव द मनी. ओके, पब्लिक इंफॉर्मेशन वाया ऑनलाइन डैशबोर्ड, दिस इज क्राउड फंडिंग.
give public information if they can provide money, and then also ensure all the data to be available publicly, so that ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो emergency fund दिया या जो क्राउड फंडिंग से पैसा लिया उसमें कुछ गलत हो गया, मिसयूज हैज बीन डन। तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए भी सारी इंफॉर्मेशन तुम पब्लिक कर दो, जो भी पैसा जिसके लिए भी लिया जा रहा है कितना खर्च हुआ, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट केस, दिस इज अ रेयर केस। ओके, सो यू हैव टू मेक एवरीथिंग पब्लिक कि कोई मिसयूज ऑफ मनी यहाँ पे नहीं हुआ है। कल जाके कोई तुम्हें सवाल ना पूछे कि हाउ यू कैन डू इट, तुम्हारा काम तो ये था, तुमने ये सब क्यों किया। सो एवरीथिंग शुड बी पब्लिक। देन प्रपोजल टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर रेयर डिसीज असिस्टेंस, स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल दे दिया कि इफ एनीथिंग रेयर डिसीज असिस्टेंस इज देयर देन गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी इन द क्राइटेरिया, यू प्रपोज टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा दे ही दिया फिर देर इज अ प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी, इवन फॉर द फ्यूचर पेशेंट्स ऑल्सो। देन continuous monitoring of surgical outcomes and the rehabilitation, genuine case है, you identified it, okay, but in this particular case जो surgical outcomes जो है, मतलब after the treatment whether he is getting benefited or not, उसे भी track करो। rehabilitation, whether the person is properly rehabilitated after the surgery, उसे भी track करो, so that in future that will help for the financial aid। ओके, सो बिकॉज दैट विल इंश्योर कि भाई जो भी पैसा दिया जा रहा है सही जगह जा रहा है, सो दैट विल हेल्प फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल एड ऑल्सो, दैट कैन बी डन। ओके, कंक्लूजन, हमने ये वाला इसमें नहीं दिया है कि खुद की जेब से दे रहा है। ओके, वी हैव नॉट गिवन इट। ओके, यू कैन राइट इट, आई एम नॉट सेइंग दैट इज एनीथिंग रॉन्ग, सो यू कैन राइट इट, no problem in that, okay, but don't focus much on giving the money from your own here, because the thing is, of course you are ethical person, okay, but you are a civil servant। ऐसे पैसे बांटते रहोगे तो खत्म हो जाओगे, फिर रोज ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तुम्हारे पास। ओके, बट यस ऑफ कोर्स इफ यू वांट यू कैन गिव, देयर इज नथिंग रॉन्ग कि मैं दे दूंगा भाई पैसा। कंक्लूजन वही है, राकेश हैज अ अपॉर्चुनिटी टू सेट अ फंडामेंटल एग्जाम्पल फॉर कंपेंसेट गवर्नर, कि भाई है भाई कंपैशन वाला, कंपैशनेट गवर्नमेंट, कंपैशन वाला गवर्नमेंट है, तो CSR से भी पैसा लिया है, इमरजेंसी फंड से भी पैसा लिया है, ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर की गई है। ओके, दिट विल सर्व एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट विल लीड टू एक्सेलरेट रिफॉर्म्स इन सीनियर सिटीजन वेलफेयर स्कीम्स ऑल्सो। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज सस्टेनेबल ओनली व्हेन स्टेट इंस्टिल होप in the face of last person racket decision affirms this value। तो रिजेक्ट तो तुम कर नहीं सकते हो, but you have found out different solution। One solution that we discussed, that enrolling the person in any other scheme, that also you can write here, किसी और स्कीम में भी उसे डाल दो, that is also a good solution। Okay, so if this can be done, then all problem is solved। Okay, then at last relevant thinkers, which are the thinkers which are here, Immanuel Kant, do your duty, John Rawls, we already know what is the John Rawls said, prioritize the most disadvantaged person, Mahatma Gandhi, trusteeship principle। Okay, this can be, trusteeship principle is for the industries who are giving CSR funds to help the people, the money you have, it's not your money, it is the public money, so you should help whenever it is needed। Okay, Carol Gilligan, ethics of care, prioritizing dialogue and empathy in the moral decision, Max Weber, transparent enforcement of legal rational norms in the foundation administration। So we ensured the transparency also, and he asked for legal rational norm, following the rules and regulations, but here Max Weber cannot be completely true, because you cannot just focus on rationality here, you have to have values or ethics here, cannot be completely rational, or we cannot completely follow even the Kant here, who says that follow your duty, don't think about the consequences। Here we have to think about the consequences। Okay, and ethical values, which are different ethical values here, compassion, of course, justice, fairness, transparency, moral courage, collaboration, empowerment and the public welfare। Okay, because collaboration here, one more, because you are coordinating with different institutions, communities and the funding resources, that is why collaboration has been used here। Understood? केस स्टडी में पता तो चला होगा बहुत सारी चीज़ें अब तक। ओके, वी हैव टेकन 4 केस स्टडी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव की केस स्टडीज थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस थी। वी हैव टेकन द केस स्टडी जो स्मॉल भी थी, बिग भी रहती है। बिग केस स्टडीज, द थिंग इज यू हैव टू रीड अ लॉट, एंड इन बिग केस स्टडीज सो मेनी थिंग्स हैज बीन गिवन इन डिटेल,
जैसे हमने सेकेंड केस स्टडी देखी, so many things were given in the detail. In this case study also so many things were given in the detail. Understood? एक स्ट्रक्चर तो समझ आ गया होगा. At least see, we have taken section 1 also and section A also and section B also. Now I hope you understand what is the ethics subject. Okay, at least section A में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, how you deal with. Section B में किस तरह के क्वेश्चन है, how to deal with that. Okay, any doubt? All clear? Okay, then see you in the next lecture. All the best.